well. This is a very important session, special session for all those who have applied basic specialist training in the Irish health system, and they are looking forward to have an interview, especially next week. आप लोगों को पता है कि मैंने few months ago एक कैंपेन स्टार्ट की थी कि आयरलैंड के अंदर नॉन ट्रेनिंग जॉब के अलावा अक्टूबर के अंदर एक ट्रेनिंग स्लॉट्स ओपन होती हैं जिसमें जॉब्स आप अप्लाई करते हैं, आपको एक मैसिव एक्सपीरियंस मिलता है, एंड देन people secure training as well. I have a person with me, a host with me, and this is a pure example. I will explain later. तो काफ़ी लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया कि वो पाकिस्तान में हैं और उनका इंटरव्यू के लिए उनको कॉल आई है आरसीपीआई के स्पेशली पीडियाट्रिक्स और मेडिसिन की बेसिक स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग के अंदर, एंड दे आर लुकिंग फॉर द गाइडेंस. आई एम रियली सॉरी, apologizing के लास्ट फ्यू वीक से आई हैड commitments with my family as well as working commitments. काफ़ी बिजी है इधर दिसंबर, तो आई कुडंट मेक एनी वीडियोस, एंड स्पेशली मैंने बड़ी मुश्किल से मेरे जो होस्ट हैं डॉक्टर कायनात, उनसे टाइम लिया है, एंड शी इज़ आल्सो वेरी बिजी. तो एक सेशन आपके लिए अरेंज किया, एंड विल मेक श्योर दैट दिस सेशन इज शॉर्ट एंड स्वीट फॉर यू, नॉट मोर देन 30 minutes. तो बेसिकली बिफोर आई गो इनटू डिटेल, मैं इसका आपको एम तो बता दिया है, बीएसटी इंटरव्यूज स्पेशली जनरल पेडियाट्रिक्स एंड जनरल मेडिसिन के लिए, और उसके साथ साथ मैं अपने होस्ट को इंट्रोड्यूस कराता हूँ. और फिर जो हमारा एक्चुअल प्रोग्राम है वो ये है कि शी विल बी डूइंग सम प्रेजेंटेशन, एंड टू पार्ट्स. वन पार्ट इज दैट शी विल बी शेयरिंग द एक्चुअल जो एक ऑथेंटिक मार्क शीट है इंटरव्यू की, जो कि हर कैंडिडेट के लिए एक फेयर ट्रांसपेरेंट वे से कंडक्ट की जाएगी. वो शेयर करेंगे कितने मार्क्स हैं, क्या क्या आपसे वो एक्सपेक्ट करते हैं. And then after that, she will give also deliver some important tips and tricks on the interview guidance के इंटरव्यू कैसे आप प्रिपेयर करें, रिसोर्सेज वगैरह. बिफोर गोइंग टू फर्दर डिटेल, मैं इनको इंट्रोड्यूस करता हूँ. डॉक्टर कायनात अमीन, ब्रिलियंट इंटेलेक्चुअल, पाकिस्तान से इन्होंने 2019 में किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग हाउस जॉब शी लैंडेड इन आला in 2021. And the word I used, smart, brilliant, intellectual, is that the next year, within 6 months, she secured a basic specialist training on a stamp 1, which means कि इन्होंने जो नया सिस्टम है स्टैम्प 4 का, जिसमें आपको आयरिश के इक्वल रैंक करते हैं, उसके बगैर इन्होंने सिक्योर किया. इसलिए शी इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर यू गाइस. जो पाकिस्तान में है, जो मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि whether we'll be able to secure a training or not because we don't have a stamps. So she is the best example in front of you. So she completed basic specialist training, hard working. I worked with her, and after completing the basic specialist training, she directly went the same year into higher specialist training. आपको काफ़ी साल लगते हैं, when you are Irish, आपको काफ़ी साल लगता है हायर स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ट्रेनिंग में गैप आता है. बेसिक स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद यू हैव टू गो फॉर अनदर इंटरव्यू फॉर हायर स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग. तो माशाल्लाह माशाल्लाह इन्होंने उसी ईयर हायर स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग भी सिक्योर की. Mashallah. Congratulations, Dr. Kainat Amin. I'm so grateful to you and welcome to my audience. Especially created a YouTube channel for the guidance. और I'm so happy कि आपने हमें टाइम दिया. तो without any delay, आप शुरू कर सकती हैं अपना सेशन, और मैं आपकी प्रेजेंटेशन शेयर कर देता हूँ. Is that okay? Thank you so much, Dr. Lika. आपने बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी मेरी. It's all blessings of Allah and hard work and prayers of our parents. लेकिन नो डाउट आपकी जो सर्विसेज हैं, दे आर वेरी कमेंडेबल टुवर्ड्स द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तानी डॉक्टर्स. स्पेसिफिकली स्टैम्प 4 is a big milestone, so I would really like to commend and salute you for your services. No doubt they should be recognized and appreciated. हम अगर कहीं पहुंच रहे हैं तो you're paving the path for us, you know. तो it's all as a team together, and I hope कि जो आज का सेशन हम करेंगे, it will be very helpful for all our Pakistani colleagues and juniors जो आना चाह रहे हैं, ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं. तो we'll try our best to help them. Thank you so much, Dr. Kainat. So nice of you for your kind words and compliments. Thank you. तो आई थिंक दैट आपने इस सेशन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है. Yeah, फर्स्ट so सेशन, आप अगर मेरी presentation शेयर कर दें तो ठीक है, ठीक है. जी, अच्छा, आई होप कि आप यू कैन सी दैट. इज इट क्लियर?
It's all clear. So I'm going to start now. So this is a BST interview guidance, specifically for pediatrics and general internal medicine under the umbrella of RCPI. So सबसे पहले जो ये शेयर किया है हमने, that is the interview scoring guidelines, that is for general pediatrics. So it's a total of 100 marks. जब आप shortlist हो जाते हैं, shortlisting का अपना criteria, and after that, you have to go through the interview process. That interview का भी each and every single question and part holds separate marks और उसका अपना weightage है. So altogether it's 100 marks for general pediatrics. So the first thing you can see on the top as it's shared on the screen, academic achievements. आपकी अगर कोई undergraduate academic achievement है, कोई gold medal है, distinction है, कोई आपने research project किया है, कोई study है, anything, कोई paper है, publication है, whatever it is, it will hold weightage and it's 10 marks each. So it just depends कि आप आने से पहले अपनी CV during your undergraduate years कितना build करते हैं step by step. It all adds on to the interview process. फिर उसके बाद आते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आप पूछते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वुड बी जैसा कि आपने देखा लिखा हुआ है, enthusiasm, understanding of pediatrics, what is the scheme, do you know what actually is BST, what is SST, so at least they know कि आप जिस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं you are well suitable for it. So it's like 1 or 2 questions, 10 marks each. It just depends किस तरह का question पूछा जाता है. It's very hard to say. So that is 20 marks. Then they will ask you some clinical questions related to pediatrics or medicine. जिस भी interview में आप बैठ रहे हैं, and there'll be 2 questions, and they can sometimes be integrated into ethical questions as well. So clinical and ethical together हो सकता है, and that is 30 marks. Two questions, 15 marks each. उससे अगला है professionalism, resilience, system thinking. इसमें आपके आते हैं miscellaneous किस्म के questions, ethical questions, the hairy potato questions, जिसको भी आगे मैं discuss करूँगी. You'll get to know more about that. So it can be anything they can ask you. वो 2 questions हैं, that will be 30 marks. So altogether you'll see it's 100 marks. But if you see कि जो आपके undergraduate या academic achievements है, they itself are holding 20 marks. So if you have that out of 100, 20 तो आपने secure कर ले, so the rest is 80. That is solely your interview and how you perform an interview. So we will talk about that step by step, and we'll see. We'll go to the next slide. Do you want to go next, Dr. Lika? That's okay. Sorry, no. Go back, sorry. Yeah, there we go. Yeah, sorry. So that is the marking criteria for general internal medicine. I would say I'm not the expert person, but जो interview होता है, more or less, it's the basics are same. आपके clinical questions different होंगे, but marking criteria, आपका interview का जो criteria है, system है, it's more or less the same. So वो जो हम अभी आगे discuss करेंगे, it's all going to be generic, and hopefully for everybody applying and sitting in interview, it will be a useful session. तो अगर हम ये interview scoring guidelines देखें for internal medicine, so again, academic achievement, see, इसकी हर जगह अपनी weightage है, and that is how important it is. Undergraduate academic achievement, any research, any other qualifications, professional development में आपका बहुत कुछ आ जाता है, आपने कोई courses किए हैं, masters किया है, diploma किया है, anything. पाकिस्तान में आजकल बच्चे BSc करते हैं and all those things. So this all matters, So undergraduate academic achievements के 20 marks हैं. If you have research, given the fact if you're first author होना ज़रूरी है, you have 13 marks, and any other professional development, you have 7 marks. Then there's going to be 2 interview questions, जो कि it's more or less clinical and ethical integrated, 20 and 14 marks each. And then overall वो आप देखते हैं कि आपकी interview की performance कैसी है, आपका aura कैसा है, body language कैसी है, how did you communicate, was it comprehensive, concise, were you confident, all of that adds all together to उसके 26 marks. So this is all together 100 marks. So ये है general internal medicine का scoring criteria. So and both of these are available on RCPI's website. If you go, ये मैंने वहाँ से लिए हैं, अगर आप जाएं आपको पूरी details मिल जाएंगी, what to expect, what is the shortlisting criteria, what is the interview scoring guidelines, what to expect on the day. So if you go to the RCPI website, you'll find everything over there. Fantastic. So 30-70 pediatrics and 60-40 general medicine. Fantastic. Yeah. Okay, so I suppose we're going to go to our main presentation now. जिसके बारे में we'll talk one after, step after step, and make sure that it's easily delivered to all of you. So the BST interviews are online. They're Zoom based.
There's usually a panel of 2 to 3 consultants and a member from our CPI. It's all a recorded session. They will let you know in advance about the time, and make sure you check your cameras, your audios, where to sit, good lighting, dress up, formally, and, this all matters. Everything matters. So the duration is more or less 15, not more than 15 minutes. 15 minutes is what we know for BST. They can ask you 4 to 5 questions. 15 minutes में 4-5 questions ही पूछे जाते हैं. You have 3 to 4 minutes to answer each question. So that's why it's very important कि आप बहुत precise हैं. आप उसको practice करें. ये interview जितना आप practice करेंगे उतना ही आप बेहतर होंगे. And practice in front of your colleagues, consultants, ताकि जो hesitancy होती है वो भी थोड़ी settle हो जाती है. And you just get very fluent with it. So broadly in an interview, हमने पीछे criteria to discuss किया, but broadly 4 domains होती हैं, 4 to 5 किस्म के questions होते हैं जो वो पूछते हैं. First one is usually your introduction, your CV or what you know about the scheme. Next questions could be about any projects, audits, research, publication. Third could be your ethics, professionalism, questions and scenarios according to that, and then they'll definitely ask you clinical scenarios as well. We'll go to the next slide. So the first question that they'll usually ask is, please introduce yourself, or they can ask, please take us through your CV. So how you start is, your first impression is going to make a big mark. जो आपका पहला impression पड़ गया है, it is going to go through those 15 minutes. So first of all, make sure when the interview starts, you come in with a smiling face, greet the people. They'll tell you your names, you tell your name, and make sure camera में you interact with all of them. So they know कि आपको पता है कि 3 लोग हैं. Interview के questions एक बंदा पूछेगा, but the other persons will mark you. So it's very important कि आप उन सबको picture में लाएं and make sure कि आप उनकी तरफ देख के भी जवाब दें. Just move your face, ताकि उनको पता चले. So एक चीज होती है, इसको कहते हैं elevator pitch. So elevator pitch is the first 2-3 lines जो आप बोलते हैं, it is going to set your record very high. आपकी जो expectations और आपका जो impression है वो बहुत high जाएगा. It's usually advice that prepare for a very nice elevator pitch. अगर आप मुझसे पूछें मेरी elevator pitch क्या थी, तो I would have said, good afternoon or good morning. Thank you very much for the opportunity, and I know it's a very busy day and a very competitive process. I would like my best to highlight my 3, outstanding points that will help me compete in this extremely competitive process. ठीक है, इस तरह के कुछ आप 2-3 words choose कर ले. That is your elevator pitch, and make sure जब आप ये बोल रहे हैं तो you engage with the interview panel. ठीक है. उसके बाद when they ask you about introduction, so the best acronym is CAMP. So C is for your clinical experience. Clinical experience, you start from your most recent experience, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, कितने साल से काम कर रहे हैं, कितना experience है आपका. And if you're in an Irish system, बहुत सारे candidates होंगे जो non standalone post पे हैं. And if you're working with an Irish consultant, जिसको सब जानते हैं, do use their name. If we are working under the supervision of this consultant or that consultant, it will put a good impression. So the first thing is going to be your clinical experience. Start from where you're actively working. कहाँ काम कर रहे हैं, किस hospital में हैं, किसके under काम कर रहे हैं. Then you can tell about from where you graduated, house job की, any further, Pakistan में if you've done any other work, any worked as a medical officer, किधर काम किया है, क्या clinical expertise है आपके पास. This is going to come under your clinical experience. Then you will talk about your academic achievements. Now, in your academic achievements, it can be your undergraduate distinctions, gold medals, any publications, research. Highlight करें कोई oral presentation या ऐसा article जिसके आप first author हैं, because this is going to mark high. अगर आपने कोई oral presentation दी है in an international conference, do mention that. कोई audit किया है, उसको publish किया है, do mention that. कोई research है, do mention that. That is very important. So that comes under your academic achievements. उसके बाद you're going to highlight your management leadership skills. And this is somewhat जो कि हम लोग थोड़ा lack करते हैं इस चीजों में. Back home इतना इस चीज के बारे में कोई positive environment नहीं होता. आपको opportunities भी शायद मिलती हैं, नहीं मिलती. But this is very important. This is where you make a difference.
Everybody is going to have clinical experience. Everybody is going to have academic achievements. कोई exams हैं, all those bits and pieces वो सबके पास होती हैं. Where you compete is ये चीजें, management skills, leadership, teaching, इसमें जो है you're going to outgrow others. तो from undergraduate years अगर आपने कोई charity work किया है, कोई event lead किया है, कुछ organize किया है, mention that. Elsevier student ambassador हैं, mention that. किसी society के president हैं अपने college में, university में, mention that. Internship के time में ये बहुत सारी associations हैं, YDA and all those bits. अगर आप उसके कोई representative हैं, vice president है, do mention because these are all your management and leadership skills. And then it's not like आपने सिर्फ mention नहीं करना, you have to put a purpose behind it. कि management अगर आपने ली है तो आपने क्या किया है? You've bridged the gap of communication between the trainees and the administration. You know, you've worked towards a better future for your all colleagues. So it should show कि आप में वो leadership की passion है that you could work as a team leader and take it forward. And then any teaching, for bedside teaching, tutorials, interns, this is all. अगर आप mention नहीं करेंगे, they will not know. And this is how you're going to make an impact. These three things, personal attributes तक तो बात पहुंचती नहीं है. In the first 3 minutes, make sure you have a very good elevator pitch. You tell about all your academic achievements, exams, audit, research, any oral presentation, and that is very important. And then management leadership. अगर आपने ये 3 minutes में you've summarized yourself very well, you've made a very good impression. ठीक है? So, and हर एक से पहला question is always introduction. And introduction means you have to go through your CV, and CV may just remember the acronym CAMP: clinical, academic, management, leadership, teaching. That's, if you answer that properly, you're done with the first question. Usually, can we go to the next slide? Thank you. Yeah. So then sometimes they can be more particular about to know about your audits and research in detail. So they can ask you, mention, you know, any audit study you've been involved in. Now you should know what is the basics. How is audit done? Because वो आपसे ये सवाल भी पूछ सकते हैं. They will expect कि आप बताएंगे कि मैंने एक मसला identify किया. We had a standard guideline. We had a standard criteria. I met with the stakeholders. हमने identify किया. हम यहाँ पे lab कर रहे हैं. हमने fishbone analysis किया. You know, पूरा PDS से cycle किया. And so that all, you know, just read. ये छोटा सा article आपको कहीं भी मिल जाएगा कि audit कैसे किया जाता है. You should know कि audit कैसे करते हैं. पाकिस्तान में इतना ट्रेंड नहीं है, बट एटलीस्ट अगर आपने कुछ भी किया है तो दे विल एक्सपेक्ट कि आपको पता हो व्हाट इज एन ऑडिट साइकिल. सो एनी ऑडिट दैट यू हैव डन, कोई ओरल प्रेजेंटेशन, पोस्टर्स, इस this could be all in your CV or it could be a separate question, so be mentally prepared. Sometimes वो कैसे पूछते हैं, introduce your CV highlighting your clinical experience only. ठीक है? And then they will ask you another question, क्योंकि उन्होंने आपसे एक क्वेश्चन में ऑडिट, रिसर्च, पब्लिकेशंस का पूछना होता है. बट इफ इट्स अ जनरलाइज्ड क्वेश्चन के इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप सब कुछ पता है, कैंप को फॉलो करें. लेकिन अगर वो पर्टिकुलर कमांड दे रहे हैं, क्वेश्चन ऐसा पूछ रहे हैं, तो मेक श्योर यू लिसन कि उन्होंने क्या पूछा आपसे. तो इन दिस देन यू नो आपने को ओरल प्रेजेंटेशन दी है, को पोस्टर्स हैं, फर्स्ट ऑथर हैं, यू शुड नो अबाउट योर प्रोजेक्ट्स, कि उसमें क्या हुआ था. बी वेरी एफिशिएंट, समराइज, always mention about future pacing. This is very important. आप अपना जवाब दे देते हैं, but they want to know if you're enthusiastic. So I would usually say that I aim to do 1 audit per 6 months and have at least 1 first author publication in a year. And I aim to present it at a national or international conference. So it shows कि आप में वो enthusiasm है, आपने काम कर लिया है, you know about it, but ये आपके future plans हैं, तो आप proactive हैं. These are the things जो इंटरव्यू में आपको दूसरों से आगे निकालते हैं. तो always give a background, what you've done, and then always future pace it. Give your future plans that I want to do this. I will continue in continuous professional development, because clinical and continuous professional development both go hand in hand. That's very important. So we'll go to the next slide. Yeah, so now clinical scenarios. I have just mentioned about pediatrics because I'm a pediatric trainee, so I'll be more expert in that. And general medicine की भी there are just जो आपके major big emergencies, big scenarios होते हैं, वो आ सकते हैं. For general peds, in BST, they can ask you about management of DKA. There are Irish guidelines, so make sure you go through that. आप वो expect करेंगे, आपको पता होगा. Emergencies like status epilepticus, asthmaticus, NAI,
ITP, I will discuss कि ये scenarios किस तरह आते हैं, कोई basic emergencies, ABC approach. They will always see कि आप approach कैसे कर रहे हैं. You should call for help because आप एक SHO level पे हैं. They will not expect you to treat and manage conditions and emergencies as a registrar or a consultant. तो उन्होंने make sure करना है कि you are safe. तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने ABC approach करनी है and when I'm going to call for help. ठीक है. और आप कह सकते हैं कि ये इमरजेंसी आई है, आई विल गेट द प्रोटोकॉल, बिकॉज यहाँ पे इट्स वेरी नॉर्मल. आपको एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप चीज़ों की डोजेज को रट्टा लगाएं, या दे एक्सपेक्ट कि आपके पास अगर एक प्रोटोकॉल है यू ब्रिंग इट, ताकि कोई जो है वो मिस्टेक ना हो. ठीक है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेंशन ऑल दीज थिंग्स. And then some clinical scenarios can be integrated with ethical issues. I'll discuss one over here because abhi hum discuss kar rahe hain. So they could give you a scenario where they say a 3-month-old baby comes in with unexplained bruising. ठीक है. Emergency department में आया है. How will you approach? तो जाहिर बात है, you will go make sure, आप ABC से start करोगे, history लोगे, you'll examine, you'll see 3 months old बच्चा है, what was the mechanism, is the history consistent? Definitely, but then you also rule out any other organic causes. कोई bleeding की history तो नहीं है, कोई family history तो नहीं है, तो you have to be very sure before saying NAI is non-accidental injury. So you have to be very sure कि आप NAI label करने से पहले एक medical issue को rule out करें, because they can always mold your scenarios. Probably bruising के साथ बच्चा आया है and or fractures के साथ आया है, and it could be bleeding disorder, or it could be some bone related disorder, osteogenesis imperfecta, something like that. But then वो mold ऐसे करते जाएंगी चीजों को कि okay, bloods, you've done the bloods, you've done the investigations, everything is normal, and you're going towards the pathway of safeguarding social issues, and what happens is the dad picks the child and runs away. What do? Call the guards. They just want to listen. They just want to know that you are safe. So उस stage में you will inform your consultant, you will call the guards and call security. That is it. कुछ pet words हैं जो वो सुनना चाहते हैं आपके मुंह से जब ये scenarios आते हैं इस तरह के. So just make sure you make yourself go through these scenarios. इन सब की guidelines पड़ी हुई हैं अगर आप search करें RCPIP HSC पे. तो just make sure ये 3-4 चीजें काफी important हैं. We go to the next slide now. Yeah. So the third question could be all related about your ethical professionalism, because that's a very important part over here. So सबसे पहले you should know what are the domains of good professional practice. मैंने यहाँ पे attach की हुई है, आप देख सकते हैं. What is clinical governance? वो भी आप देख सकते हैं. And all of this medical council की पूरी guide है, पड़ी हुई है, आप उसको download कर सकते हैं. Is guide to professional conduct and ethics. तो बहुत सारे ethical scenarios उसमें mentioned हैं. डिस्कस किया हुआ है कि आपको ऐसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप उसको डील करें. बहुत सारे एथिकल सिनेरियोस आएंगे, वो मैं डिस्कस करूंगी, बट दिस इज डेफिनेटली डाउनलोड एंड गो थ्रू इट. It is going to help you guys for ethical and professional scenarios. Okay, we go to the next slide. Yeah, so ये बात मैं इधर कर रही हूँ, आपके ethical scenarios कैसे आ सकते हैं. They could mention के about any sort of medication error on the ward. It could be by you or by the nurse. It could be you've done, you can get difficult parents and they just don't want to do any investigations or blood investigations, and you did send some bloods on them and the blood results came back abnormal. What do? So इधर आप छुपाते नहीं है चीजों को. So there is a thing called open disclosure. सबसे पहले in any sort of error, कोई गलती हुई है, कोई mistake हुई है, the parents have the right to know कि उनके बच्चे के साथ क्या होता है. So this is open disclosure. I personally had the same question. So what she wanted to hear from me was open disclosure. कि आपने open disclosure करना है. And always क्या होता है, you take STAR approach. STAR. So that is situation. आप देखते हैं situation क्या बनी है. What is your task? आपने क्या करना है इसमें. आपने जो देखा, फिर आपने क्या एक्शन किया और उसका रिजल्ट क्या है. ठीक है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक सिचुएशन आती है जिसमें जैसे कि देयर हैज बीन अ मेडिकेशन एरर. ठीक है. तो मेरा टास्क क्या है, सबसे पहले टू मेक श्योर द चाइल्ड इज सेफ, द चाइल्ड इज क्लिनिकली वेल, हीमोडायनामिकली स्टेबल. ठीक है. दैट्स दैट. एंड उसके बाद व्हाट आई डू इज आई वांट टू डू एन ओपन डिस्क्लोजर. सो व्हाट विल बी माय एक्शन. आई विल गो टू द पेरेंट्स. First of all, I will apologize. I will apologize for the medication error that has been made. I will assure them that their child is perfectly fine and
there's no side effect or dangerous side effect to be observed, but still we will observe him. And then we can let them speak and listen to them, because of course वो upset होंगे, तो हमने उनका सुनना है. And after that we will offer them that there is a PAL service, patient advisory service होती है, जिसमें if the parents want they can go and complain, and then you let them know कि हम incident report भी करेंगे. An incident report is just to make sure to pick के error कहाँ पे हुआ है. तो ये सब चीजें, ये आपका एक्शन है, और उसका रिजल्ट क्या होगा कि you've done the open disclosure, parents are satisfied, the child is fine, and you've done an incident report. So this is how you will approach this scenario in STAR. ठीक है, जब आप स्टार में लेके चलेंगे, you will not forget anything. इसी तरह you can deal with all other scenarios. You could have some scenarios regarding professionalism. You could have a difficult colleague at work. You could have some conflict at work. आजकल आपके बहुत rosters के conflicts होते हैं, leave के conflicts होते हैं. तो you will always, deal with them in STAR approach. Situation, task, action, result. आप इसको लेके चलेंगे, that is how they will expect you कि आप उसको answer करेंगे. Or, there could be colleague under influence. ठीक है ना, कोई alcohol के बाद आ गया and that this person is under influence and he's not safe to work. So these are the sort of scenarios, they will definitely ask you, and they can sometimes say it very straightforwardly. Give us an example when you have to deal with a difficult colleague, or when you had to deal with conflict at work, So it could be a straightforward question, or they could always, ask as a clinical scenario, So it just depends that you understand what they're asking, और फिर आप approach अपनी ठीक रखें, so it should be fine. So this is what comes under ethics, professionalism. ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं. Go to the next slide. Yeah. So sometimes, they can ask you competency-based questions. More or less, जो पीछे हमने discuss किए, this is all your competency. आपको professionalism देख रहे हैं, आपका knowledge देख रहे हैं, clinical scenarios में भी, everything, the STAR approach. But sometimes, जब कोई clinical scenario आप answer कर रहे हैं, make sure आप feedback ज़रूर mention करें, that you would like to take feedback from your seniors, from your colleagues, from your nursing staff, from your consultant. तो ये just show करता है कि आप एक बहुत हेल्दी अप्रोच लेके चल रहे हैं. तो एवरी सिंगल थिंग बहुत मैटर करती है इस चीज में. अदर एग्जांपल्स कुड बी, दे कुड आस्क यू गिव अस एन एग्जांपल ऑफ बीइंग अ लीडर. अब आप लीडर जो हैं, कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं. यू जस्ट टेक द STAR, सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट अप्रोच. इट कुड बी एनीथिंग यू डिड एज एन अंडर ग्रेजुएट. कोई आपने लीडरशिप का काम किया, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया, और इट कुड बी एन इमरजेंसी. एक इमरजेंसी हुई एंड यू टुक लीड, you were the leader, ठीक है. या आपने अगर को मैनेजरियल रोल किया है, को गाइडलाइंस बनाई हैं, को पॉलिसीज बनाई हैं, इसमें आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं. It's just that they want to know आपकी अप्रोच कैसी है. They can also ask you about, explain a situation where you were calm under pressure. So it's mostly emergencies, ठीक है. आपकी जितनी clinical emergencies आ गई, जो भी पीछे में डिस्कस की हैं, तो they can ask you like that as well. And conflict management at work. So it all is ethical, professional, competency-based questions. It's not a hard and fast rule कि वो एक सवाल पूछेंगे, दूसरा पूछेंगे, वो दो एक तरह के भी पूछ सकते हैं. So you should just be ready कि मैंने approach उसको कैसे करना है. Go to the next slide. हाँ, तो ये है आपके hot potato questions. हमने बात कर ली आपकी introduction की, कि आपकी CV कैसी है, आपको पता होना चाहिए, आपने elevator pitch अच्छी रखनी है, 3 minutes का introduction, and वो ये सवाल हर एक से पूछते हैं. Next question could be either audit, research projects. तीसरा सवाल clinical हो सकता है. चौथा आपका कोई ethics, professionalism, इससे related आपका कोई question हो सकता है. And sometimes they can ask you miscellaneous questions, जो इनमें से किसी domain में नहीं आते. तो they can very much ask you, why this specialty? Why pediatrics? Why you've chosen? Or why should we choose you? Or what do you know about the scheme? Always know कि BST है, HST है, इतने साल हैं, यहाँ ये mandatory rotations हैं. You should know your scheme in and out. They'll expect you. What are your career goals? 2 proud achievements and a disappointment. How do you manage stress? Or what do you do in your free time? How do you maintain work-life balance? What are you most proud in your CV? तो ये आपके hot potato questions हैं, जिसमें usually आप approach लेते हैं, आप उसको broadly 3 चीजों में categorize कर देते हैं. I'll try to explain each of this,
ताकि आपको थोड़ी हेल्प हो जाए. Why this specialty? ठीक है, so usually if you've got a very good remark from some professor or your consultant, जैसे कि I got a remark from one of my professors in Limerick that she said, Kainat, you are made for pediatrics, you know, so it's a big compliment. So that is something motivates you. अगर कोई ऐसा सिनेरियो हुआ है आपके इंटर्न ईयर में, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर में, मेंशन दैट, कीप इट ओरिजिनल. ठीक है, एआई से आप इन सब के जवाब निकाल सकते हैं एंड दे वेरी वेल नो के एआई जनरेटेड कौन से आंसर्स होते हैं. जस्ट ट्राई टू स्टे रियल, यू नो. तो आप बताते हैं जी मुझे मेरे कंसल्टेंट ने ये कहा या मेरा ये बैकग्राउंड था. देन व्हाई द स्पेशलिटी. पीडियाट्रिक्स जो है वो बहुत ही रिवॉर्डिंग है. बहुत आप वैरायटी ऑफ पेशेंट्स के साथ डील करते हैं, बहुत रिसर्च ओरिएंटेड है, आप बहुत सारी फ्यूचर स्टडीज में पार्ट ले सकते हैं. तो इस तरह के जस्ट गेट 3 मेन क्वेश्चंस, क्लिनिकल कर लें, एकेडमिक कर लें एंड सम सॉर्ट ऑफ रेफरेंस अगर आपको कोई मिला हुआ है. दैट इज हाउ यू गोइंग टू आंसर. 3 बिग पॉइंट्स आपने हर सवाल के निकालने हैं and then you'll be able to answer it properly. उसके बाद why should we choose you, या आप बात कर लें what are you most proud in your CV to make sure you know. आप again take 3 points. Any academic achievements, जैसे कि I had a gold medal in pediatrics, so that was the first thing जो मैंने mention की कि that is what I'm proud of, you know. और उसके बाद मैंने उनको कहा, मैंने उनको अपनी CV बताई that I you know I did internship, came to Ireland, applied for my training, got my induction, got into the training. So I fast tracked my career. तो वो it shows that you very motivated. ठीक है. और उसके बाद जो है आपने कोई publication, कोई oral presentation, तो ये चीजें आप mention कर सकते हैं इसमें. What do you know about the scheme I've discussed? आपको पता होना चाहिए. Everything, आपके पूरा curriculum पढ़ा होता है RCPI पे, तो आप वो जाके देख सकते हैं. What are your career goals? So the career goals will always be immediate, mid-term and long-term, you know, short-term and long-term. So immediately आपका क्या goal है? You can again divide this as clinical. You know, आपका okay, I want to be a part of this scheme. I want to, you know, have all the rotations, और जो आपको variety of patients मिलते हैं, tertiary center में काम करने का मौका मिलता है. You get more independent. आपकी communication, diagnosis skills बहुत बेहतर होते हैं. Then you get the subspecialist experience. और उसके बाद आप गोइंग फॉरवर्ड इन द स्कीम आप चाहते हो कि आपको एचएसटी मिले, आप कोई फेलोशिप करें, यू नो, जस्ट आप उनको पता होना चाहिए दैट यू मेकिंग सेंस. आपके पास एक शॉर्ट टर्म से लेके लॉन्ग टर्म तक आपके गोल्स हैं. ठीक है. उसके बाद आप एकेडमिक्स कर सकते हैं कि आप चाहते हैं आप फर्स्ट ऑथर पब्लिकेशन करें, केस रिपोर्ट करें, उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, नेशनल प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट करें, तो वो आपकी एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं. उसके अलावा आप अगर कोई और, जैसे कि बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, डिप्लोमाज आते हैं, मास्टर्स आते हैं, एचएससी वाले स्कॉलरशिप पे कराते हैं, मेक श्योर कि आप वो सब चीजें मेंशन करें. एंड देन अल्टीमेटली आपका फाइनल गोल इज टू वर्क एज अ कंसल्टेंट इन आयरलैंड. कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन कह लें, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन कह लें, दिस इज व्हाट दे वांट टू हियर आउट ऑफ यू, यू नो. लेकिन उसके साथ व्हेन यू मेंशन दैट, जस्ट मेक श्योर आप ये भी मेंशन करें कि आई वांट टू बी enrolled in continuous professional development. I want to polish my teaching management skills, because all of this goes hand in hand and it adds plus point when we apply for consultant post. So जब आप ये सारी बातें करते हैं तो they know कि ये बंदा is long term, मतलब उसकी foresight बहुत ज्यादा है. So that really puts a good impression. Next is 2 proud achievements, disappointments. So whatever it is आप mention कर सकते हैं depending on आपकी CV कैसी है. Now the next question, how do you manage stress, free time, work life balance? इसमें भी आप बहुत टेक्निकली अपना सवाल का जवाब दे सकते हैं. आप उनको कह सकते हैं कि मतलब BST स्टार्ट करेंगे, इट्स अ वेरी बिजी डिमांडिंग फील्ड where we have to be very involved clinically, academically. We have to take both things together. So it's very important कि आप एक work life balance रखें. तो आप जब वर्क छोड़ते हैं, it's very important that you prioritize your tasks. जब आप वर्क से निकल रहे हैं, you delegate and you communicate it properly. ठीक है. When you're coming out, आप hand over करते हैं, तो make sure कि आप prioritize कर रहे हैं कि कौन सा patient है जो मैंने hand over करना है, उसको delegate करें, communicate करें, proper किस्म का hand over करें. So once you leave work, you don't take the stress. You're relaxed. That work is closed and you have a personal life at home. ठीक है. It's very, आप देखें आपने अपने सवाल का जवाब भी दिया और उनको बताया भी कि मुझे पता है कि मैंने प्रायोरिटाइज करना है, डेलीगेट करना है, प्रॉपर कम्युनिकेशन और गुड हैंड ओवर करना है. तो यू जस्ट टेलिंग देम कि आई कैन डू ऑल दीज थिंग्स.
And then you can mention free time में आप क्या करें, whatever your hobbies are आप mention कर सकते हैं. And then at the very end मैंने जो mention किया था, I just said कि I know in my HST interview I just mentioned that I know as a trainee, as a specialist registrar, it is our work to train our juniors and help them, and you should always guide and lead by example. So it's very important what you do, your colleagues, your juniors, your fellows will follow that. So it's very important that you just make them recognize and realize कि आपको पता है, it's very important. So that's that. We go to the next slide. Yeah, then hot potato questions for pediatrics specifically. Sometimes they can ask these questions as well. 3 greatest advancement in pediatrics in recent years. तो वो आप थोड़ी रिसर्च करें, उसको ढूंढें. वैक्सीन्स हैं, जीन थेरेपीज हैं, बहुत सही नई कैंपेन्स हैं, बहुत एडवांसमेंट्स आ गई हैं. जस्ट मेक श्योर यू रीड थ्रू इट. आंसर्स तैयार रखें इसके, वो पूछ सकते हैं कुछ भी. टॉप 3 अनमेट नीड्स इन पीडियाट्रिक्स इन चाइल्ड हेल्थ इन आयरलैंड. तो मैंने जो इसका आंसर तैयार किया था, आई टेल यू गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स मेंटल हेल्थ. ठीक है, camps, child and adolescent mental health services. We are under crisis. So that is the first thing जो हमें करना चाहिए. Other thing आप कर सकते हैं obesity. Obesity यहाँ पे बहुत common है, लेकिन थोड़ी under recognized है. उस तरीके से आपको मतलब treatment options and lifestyle options नहीं मिलते. That is it could be anything. मैंने ये किया. And तीसरा मैंने किया electronic health records. It's very important, जो कि अभी तक हमने introduce नहीं किए हमारे सिस्टम में. सो इट्स टोटली अप टू यू, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि आप किसी भी किस्म का, बट यू शुड हैव अ गुड थिंकिंग. दे कैन आस्क यू मोर कि इसके पीछे आपकी थिंकिंग क्या है. सो जस्ट कुछ अपना आंसर तैयार रखें इसके बारे में. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू हैव गॉट फंडिंग, व्हाट 2 प्रोजेक्ट्स विल यू लॉन्च. दे कैन आस्क यू दैट. ये आपकी जो है ना क्रिटिकल थिंकिंग, वो उसको जज करते हैं. तो just see what you guys want to do for that. And yeah, another question. Prepare to answer for any recent outbreaks. When I gave my interview, there was a measles outbreak. So I somewhat knew they will ask me about measles. They can ask you, जैसे कि आजकल there's an RSV influenza outbreak. बहुत ज़्यादा. Every other kid is either RSV or influenza in pediatric emergencies. We are full. We're fully, backlogged. So they could ask you that, you're in an interview, that there has recently been an outbreak of RSV influenza. What do you think is the cause, and how will you manage it? So these 2 questions, and they'll expect कि आपको पता हो कि क्यों हो रहा है, क्या cause है, आप उसको कैसे manage करेंगे. Measles भी आजकल अभी in air है. They could ask you about measles as well. And measles के पीछे there's a big story because of the MMR vaccine, the theory of linking it to autism, people refusing vaccines. थोड़ा सा वो उसके बारे में सुनना चाहेंगे. फिर वो चाहते हैं कि आप उसको कैसे अप्रोच करेंगे. आप कोई फास्ट रेस्क्यू टीम्स बनाते हैं, अपनी इमरजेंसीज को आइसोलेट करते हैं. whatever it is, at least you should come out with a plan. So this is something they can ask, very rare, but they can ask. You cannot say कि interview panel पे जो बैठे हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है. It's लेकिन questions इन्हीं में से होंगे, इससे बाहर नहीं है. इसके अलावा वो कुछ पूछ नहीं सकते, पीछे कुछ बचता ही नहीं है. Another thing जो है, I think I didn't mention, they can ask you what are the qualities of a good leader. तो ये भी आपको पता होना चाहिए. So the last is, I've already discussed, is the hot potato questions. So you layer it either at clinical level, patient level, departmental level, specialty level. या आप उसको टाइम करते हैं immediate, medium term, long term, your career goals, your domains, clinical, academic, management. As I've said, पीछे जितने questions का मैंने आपको answers explain किए हैं, वो सब इसी की basis पे. If you go back and listen, मैंने इसी की basis पे हर questions की 3 आपने points निकालने हैं और उसको answer करना है. So that's basically it. It's 15 minutes. Honestly, जो उसका stress होता है, that is way more than how the interview goes. It goes in a blink of an eye, it's very quick. But the main thing is you just keep a hold of your nerves. आपका overall conduct कैसा है वो जरूर देखते हैं. You go in with a smiling face. You introduce yourself. You make sure you're involving all the panel. How is your body language? Sit sturdily. Dress formally. आपका you comprehensive. You're summarizing things properly. You know what you're saying. And बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम रट्टा लगा लेते हैं, and it looks as if हम एक speech दे रहे हैं,
they don't like that. Make sure up naturally, you can think and speak. It's absolutely fine, but time is limited. So make sure up ratta laga ke aise na lag raha ho ki you're delivering a speech. So it's all aura together when you go as a good package, this is what matters. इंटरव्यू इन्हीं क्वेश्चंस में से आता है, इसी की बेसिस पे आपकी मार्किंग होती है अकॉर्डिंग टू योर इंटरव्यू स्कोरिंग गाइडलाइंस. एंड आई वुड से इफ यू जस्ट प्रिपेयर, ये सुन के you have to practice, 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 practice. Practice makes a man perfect. So it's very important कि आप अपना consultant ले लें, कोई family member ले लें जिससे आप बहुत hesitant हैं. So I practice it with my uncle because he's a consultant and I'm very shy. So what I did was I practiced with him. जब मैंने उनके सामने interview दे लिया, तो फिर वो panel पे जो बैठे हैं didn't matter, So you were very confident giving the interview. So once you just go through that, आपको जो आर्टिकल कहा है मेडिकल कॉन्डक्ट का, आपके जो सिनेरियोज आएंगे एथिक्स के, प्रोफेशनलिज्म के, हर एक का आंसर पैटर्न उसके अंदर है. मेक श्योर यू गो थ्रू दैट एंड देन उसके बाद प्रैक्टिस एंड देन प्रे. तो इंशाल्लाह हम लोग आर वे मोर competitive and no way less than the other candidates. Just come with a high confidence and show the confidence. आप दिखाएंगे उनको तो पता चलेगा. So this is how it is, and I hope I tried to be as concise and include as many questions as possible, and I hope this was of help to all of the ones listening to the video. Thank you so much. Amazing, amazing, amazing. I don't have words to appreciate, and I could see that how quickly you progress your career from basic to the higher level, and especially from Pakistan. And this all shows in your presentation. I learned a lot myself. 10 years I'm in Ireland, and absolutely brilliant, excellent. Thank I think it is a big, big favor and help from your side you. to your colleagues that who are appearing in interview. You know what? I have few questions here. Mhm. I think that this presentation that you have done is going to help the people who are looking for even the non-training jobs, Yeah, basically. So absolutely. if they, my key aim Mhm. to guide the people in Pakistan to apply for training slots. The Yeah, message behind that, it is not all about that you secure a training slot. It is about that you are exposed to a process or an environment where you prepare yourself for the next year. exactly. और इसकी प्रिपरेशन से आपके जो नॉन ट्रेनिंग जॉब्स के इंटरव्यूज हैं वो जो है इसकी उसकी थोड़ी सी स्ट्रेस भी कम होती है और उसका थोड़ा सा जो पाथवे पैटर्न है वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होता है बट स्टिल वो भी 15 मिनट का ही होता है और उसका भी ऑलमोस्ट सेम पैटर्न होता है So एंड Mhm. एग्जैक्टली. अच्छा, मैं इस पे अब क्वेश्चन ये करता हूँ कि जो लोगों ने मुझसे ज्यादा क्वेश्चन किया है. नंबर वन, आप मेरे सामने एग्जांपल है, उन्होंने कहा है कि डिसअपॉइंटमेंट पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, मायूसी. पाकिस्तान से लोगों को मैंने इतना मोटिवेट किया कि ट्रेनिंग अप्लाई करें और इधर जो लोग बैठे हुए थे वो नेगेटिविटी सस्पेक्ट कर रहे थे कि जो हम इधर है हमें ट्रेनिंग नहीं मिल रही, उधर से किसको मिलनी है. Yeah. और द लॉजिक बिहाइंड दैट दे आर पुटिंग ऑन इज दैट कि आपके पास स्टैम्प 4 नहीं होगी तो आपको डेफिनेटली स्टैम्प 4 इज अ बिग थिंग. मगर आपके फिर भी चांसेस हैं एंड दिस इज व्हाट यू गोना से कि आपने बगैर स्टैम्प 4 के ट्रेनिंग सिक्योर की. इज इट राइट? It is absolutely right. Because see, I came to Ireland in February 2021. And उसी साल के अक्टूबर में is when the applications opened and I applied. And honestly speaking, जैसे आपने कहा ना, मुझे मेरे fellows ने, everyone was like, okay, just do it for experience. Don't get disheartened अगर तुम्हें जगह ना मिली, अगर तुम्हें मतलब सीट ना मिली, it's okay. Some of my consultants said as well, okay, it's okay, it's a good practice, it's all right. They're Irish graduates. So I know somewhat आपका मोरल बहुत ज्यादा डाउन करता है, but I was very, I was like, ठीक है, that's fine. Let's see क्या होता है. So I suppose आप मैंने अप्लाई किया and I was on stamp 1, stamp 4 तो 2 साल के बाद मिलती है आपको. So I was shortlisted, I gave interview, and then in next July I was in BST. I'm in front of you. I'm a BST trainee on stamp 1. I'm not an Irish graduate. I'm not an Irish national. I'm a Pakistani graduate. I did my internship in Pakistan. I moved to Ireland straight after my internship and I applied for BST. I got it in the first attempt. MashaAllah. And that's a big example in front of you guys.
कि आप नेगेटिविटी को थोड़ा सा साइड पर रखें और पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें इस सारे प्रोसेस के, आप क्या क्या इसमें लर्न करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लर्न करें और अल्लाह ताला ने आपके लिए जो चीज़ रखी है वो आपको मिलेगी, जस्ट टू हार्ड वर्क एंड पॉजिटिव अप्रोच। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन इसमें। इस यहाँ पे बस बताऊंगी, जो हमारे पाकिस्तान में हमारे जूनियर्स कलीग्स बैठे हुए हैं, जस्ट मेक श्योर जब आप पाकिस्तान में हैं, डू समथिंग जो आपकी सीवी पे ऐड हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता चल गया कि रिसर्च ऑडिट हम इन्हीं चीजों में बहुत, फोर्थ ईयर में कम्युनिटी मेडिसिन में जो करते थे बड़ी मुश्किल से करते थे, इधर जो ट्रेनीज हैं उनको ईयर 1 से ये सब कुछ सिखाया जाता है, सो उनके लिए बहुत ईजी है, हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क होता है। सो वाइल यूर अप्लाइंग और उस प्रोसेस में मेक श्योर कि आप कुछ ना कुछ करें। को ऑडिट कर लिया, पब्लिकेशन कर ली, को केस रिपोर्ट लिख लिया और उसको किसी भी जर्नल में पब्लिश करवा दें, कुछ ना कुछ यू कर। नो व्हाट यू नो व्हाट डॉक्टर कायनात, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेरे ख्याल में जो मैंने ऑब्जर्व किया, ये पर्सनल मेरे वन टू वन सेशंस हुए लोगों के साथ उधर, आई थिंक इनके पास अवेयरनेस नहीं है और उनको पता नहीं, अंदर से एक डर भी है और उनको समझ नहीं आ रही ये करना कैसे है। मैं इसके लिए आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा कि हम एक सेपरेट सेशन करेंगे कि बिल्कुल ये जो केस प्रेजेंटेशन, ऑडिट्स, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स और रिसर्च, आप इसको कितने आराम से और कैसे कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में बैठ के तो आप बेतहाशा कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा पता चल बिल्कुल। जाए। तो एग्जैक्टली, तो मुझे पता है कि अगर ये लोगों को समझ आ जाए करना कैसे है, तो मेरे ख्याल में ये 6 महीने में 3 3 ऑडिट्स कर सकते हैं। बड़ी आराम से करा लेते हैं, तो आपको मुझे हम सबको पता है ना, तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि वैरायटी ऑफ केसेस हैं, वर्कलोड है, आप तो केस प्रेजेंटेशन इतनी कर सकते हैं कि आप सोच नहीं सकते। एक ये इस पे हम स्पेशल सेपरेट सेशन करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, एक और चीज है, लोग कहते हैं जी ये आरिश क्यों ले। आपने जो स्टार्ट में मेंशन किया कि जो कंसल्टेंट्स होते हैं और तीसरा बंदा होता है जो कि एक न्यूट्रल बंदा होता है, आरसीपीएस न्यूट्रल एम्पायर समझ ले। तो ऐसे ही ट्रांसपेरेंसी के ऊपर लोग क्वेश्चंस करते हैं कि जी अच्छा, तो मेरे ख्याल में जो न्यूट्रल बंदा बैठा होता है आरसीपीआई का, वो थर्ड एक बंदा होता है, आप इस पर थोड़ा सा कमेंट करेंगी। जी जी बिल्कुल। तो आपका पैनल इज यूजली थ्री, 3 लोगों का पैनल होता है। उसमें से आपके 2 कंसल्टेंट्स होते हैं, पीट्स का तो मैंने दिया हुआ है, आई नो अबाउट दैट। 2 कंसल्टेंट होते हैं, उन कंसल्टेंट्स में से भी एक आपको क्वेश्चन करता है, मार्क दोनों करते हैं, ठीक है। और जो तीसरा होता है वो आरसीपीआई बॉडी का एक बंदा, जिस जो सारे ऑर्गेनाइज हैं, ठीक है। एंड ये पूरा सेशन जो है वो रिकॉर्डेड होता है, ठीक हाँ है। हाँ आप कॉलेज से कह सकते हैं हमें हमारा फीडबैक दें, ठीक है। हाँ, इंटरव्यू exactly, आपका अगर गॉड फॉरबिड नहीं होता है, जो भी है, आपका जो मार्किंग है वो आपको पूरा इन डिटेल स्प्लिट करके बताते हैं कि आपको इंटरव्यू कंसल्टेंट ने ये रिमार्क्स दिए, इस क्वेश्चन में ये आंसर था, ये ड्रॉबैक था, ये लैकिंग था, ये प्लस पॉइंट था। सो इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट। एंड देन यू कैन आस्क फॉर फीडबैक। वो आपको फीडबैक देंगे कि आपने इंटरव्यू कैसा परफॉर्म किया और आपकी किस क्वेश्चन में कैसी मार्किंग हुई। सो इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट। fantastic, I think that's why it is। और थैंक यू सो मच अगेन, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। आई थिंक दैट दिस इज बेस्ट गिफ्ट टू यू guys by Dr. Kainat Amin in the start of the new year। inshallah this video will be available and हम ज़्यादा और वीडियोस बनाएंगे स्प्लिट करके। ये तो अब एक जनरल साहब ने सेशन दिया, हम स्प्लिट करेंगे इसको डिफरेंट सेशंस के अंदर। और स्पेशली वो ये जो क्लिनिकल जो एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं, इसके ऊपर आपका बहुत इसमें रोल है और आपका बहुत एक्सपीरियंस है, राइट फ्रॉम द ग्रेजुएट लेवल, आपकी एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट। तो सो प्राउड ऑफ यू बीइंग ए पाकिस्तानी। जस्ट वांट टू मेंशन हियर कि ऑल अलोंग द वे अगर आपको कोई मास्टर्स डिप्लोमा करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप जरूर करें। आजकल वो ऑनलाइन हो रहे हैं, सो उसके लिए आपको इन पर्सन नहीं जाना पड़ता। आप डिप्लोमा कर सकते हैं, स्कॉलरशिप पे कर सकते हैं। पाकिस्तान में भी ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ इस तरह का चलता होगा। कोई मैनेजमेंट का कर लिया, लीडरशिप का कर लिया, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स के आरसीपीआई आपको 4 4 मंथ्स के कोर्सेज करवाता है। ये सब चीजें करें। दिस ऑल्सो, this adds on, everything you do will add on to your CV, just the way फैंटास्टिक, that came to my यू mind. नो, फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच अगेन। बहुत शुक्रिया आपका। और फर्दर सेशंस आई थिंक पेंडिंग है और रियली एंजॉय द सेशन, बी ऑनेस्ट। इंशाल्लाह इट विल हेल्प टू द गाइस इन पाकिस्तान, स्पेशली इन पाकिस्तान। इधर के लोग तो चलो कुछ ना कुछ एक्सपोजर उनको मिल ही जाता है कि चीज़ों का, बट उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 10 साल लोग इधर रहने के बाद भी ऑडिट्स का उनको पता नहीं होता कि ऑडिट्स क्या कैसे किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंशाल्लाह
ये है कि ऑल टुगेदर appraisal for you, and especially you are a role model for the doctors who are coming to our land, कि कैसे आप अपने करियर पर फोकस करते हैं। तो इन सब के लिए आपका भी शुक्रिया, और आगे फर्दर सेशन के लिए आपकी अभी से कमिटमेंट आई विल मेक यू, इंशाल्लाह आई विल मेक इट। अपना So ख्याल much रखें जी। the kind words, and it's always a pleasure to be able to be of some help to our colleagues, you know. So inshallah, don't worry, we'll do it. Thank you so much. अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़ जी।